हेलो स्टूडेंट्स, आज आम नुआ चैप्टर पढ़े करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। आम आगु पढ़े स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तेणु इलेक्ट्रिसिटी दी भाग व्यक्त कराए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेमती द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन is called current electricity. The flow of electric charges through a conductor constitutes an electric current. The flow of electric charges in motion constitutes an electric current. Electric current. To define electric current, we choose a given area. माने करा इटला given area A. इटी माने करा positive charge flows. तेना गोटे गिवन टाइम रे किसी अमाउंट रो चार्ज फ्लो हो, तेणु रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आम इलेक्ट्रिक करंट कहबा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग through a given cross section of a conductor. The electric current is defined as the rate of flow of charge through a given cross section of a conductor. So current that is equal to charge flow per unit time. Charge flow per unit time. If the charge flow is uniform, तामाने ये जो क्रॉस सेक्शन रे जेतकी चार्ज इन करिवो सेतकी चार्ज बाहरिवो। लेफ्ट साइड रे जेतकी चार्ज एंटर करिवो तार राइट साइड रे सेतकी चार्ज बाहरिवो। तन फ्लो डला यूनिफॉर्म गोटे गिवन टाइम रे जेतकी चार्ज इन करिवो सेतकी चार्ज बाहरि आसो। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो और स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो और वी से स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज current I that is equal to Q by T. Q is the amount of charge flowing through this area. So this current is called steady current. Steady current. जदि फ्लो टा यूनिफॉर्म हम नहीं तेबे आम एरिया नबा डेल्टा ए। फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज तेणु हमको एवरेज करंट बाहर करने पड़ो। एवरेज करंट आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी होची गिवन टाइम इंटरवल, गोटे गिवन टाइम इंटरवल रे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ला डेल्टा क्यू। I average equal to delta Q by delta T. जदि टाइम इंटरवल स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल, वैनिशिंगली स्मॉल, तेरे हमको बार कर इंस्टैंटेनियस करंट। इंस्टैंटेनियस करंट that is defined as I is equal to limit delta T tends to 0 delta Q by delta T, that is equal to
dq by dt. This is called instantaneous current. SI unit of current is ampere. It is named after the French physicist and mathematician André Marie Ampere. 1 ampere, that is equal to 1 coulomb per second. 1 coulomb per second. In symbol, 1 ampere, that is 1A, is equal to 1 coulomb per second. Coulomb is the SI unit of charge. The current in a conductor is 1 ampere when 1 coulomb of charge flow through any cross section in 1 second. So 1 ampere is the larger unit. So smaller units are 1 milliampere, 1 milliampere, that is 1 mA. This is equal to 10 to the power minus 3 ampere. 1 microampere, that is 1 mu A. This is equal to 10 to the power minus 6 ampere. 1 nanoampere, 1 nanoampere, that is 1 Na nanoampere, 10 to the power minus 9 ampere. 1 picoampere, that is equal to 10 to the power minus 12 ampere. Then conventional direction of current. Conventional direction of current. Direction of current. तेणु प्रथम जाना दरकार चार्ज कैरियर्स. चार्ज कैरियर्स मेटल रे मेटालिक कंडक्टर. मेटालिक कंडक्टर रे चार्ज कैरियर ला फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are also called conduction electrons. Ionized gas रे चार्ज कैरियर ला electrons and positive ions. Electrolytes रे चार्ज कैरियर ला दीटा positive ions and negative ions. Positive and negative ions. मन कर गोटे कंडक्टर रे पॉजिटिव चार्ज फ्लो होची लेफ्ट टू राइट. पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. तेणु करेंट रो डायरेक्शन से लेफ्ट टू राइट हो. करेंट डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जो आड़ को मूव करे सेटा ही करेंट डायरेक्शन नियंती एवं एटा होची कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करेंट. मेटल रे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव करे नहीं. मेटल रे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थाए. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करे पॉजिटिव चार्ज जो आड़ को फ्लो करे तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करे. किंतु मेटालिक कंडक्टर रे चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नुह. मेटालिक कंडक्टर्स रे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ला चार्ज कैरियर्स. जदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट रु लेफ्ट फ्लो हुए तार ऑपोजिट डायरेक्शन टा कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन नियंती. तेणु कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ला ऑपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटा जे मेटालिक कंडक्टर्स रे जोटी इलेक्ट्रोलाइट्स रे चार्ज कैरियर दीटा पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव चार्ज कैरियर जदि लेफ्ट टू राइट फ्लो हबो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस जदि लेफ्ट टू राइट फ्लो हबो नेगेटिव आयंस राइट टू लेफ्ट फ्लो हबो. तेणु जो पटकू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स दैट इज पॉजिटिव आयंस फ्लो करिवो सेटा ही कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अच्छी किंतु इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी बिकॉज करंट कैन बी एडेड
by simple arithmetic. Current can be added by simple arithmetic. It follows ordinary algebra. The laws of vector addition. The laws of vector addition are not applicable. To electric currents. For example, suppose this is AO and this is BO. AO और BO दीटा conducting wires. AO आड़ को current 3 ampere flow करुची. BO रे 4 ampere flow करुची. तेबे total outgoing current along OC. Total outgoing current along OC is 7 ampere. 7 ampere. मनकर AO और OB मध्य एंगल टे 90 डिग्री हम हेले टोटल करेंट से 7 एम्पियर तेणु एटा 3a + 4a केबे 5a होबो नाही इडी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करा होबो नाही तेणु एटा सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा ही अप्लाई हो 4 + 3 = 7 तेणु इलेक्ट्रिक करेंट होची स्केलर क्वांटिटी एबे आमी किछि प्रॉब्लम करिवे A wire carries a steady current of 2 ampere. How much charge flows past a point in 5 minutes? If the charge is due to flow of electrons, how many electrons flow past a point in this time? Solution. I is given I equal to 2 ampere and time is given t equal to 5 minutes. 1 minute 60 seconds. So 5 into 60, that is 300 seconds. Now we know that I equal to Q by T. So this implies Q equal to IT. I is 2 ampere into T is 300 seconds. So this is equal to 600 coulomb. Ampere into second, that is coulomb. So this is part A. Then part B. If the charge is due to flow of electrons, how many electrons flow past a point in this time? I mean, Q equal to NE, quantization of charge. So I equal to NE by T. So N equal to I into T by E. So I into T, that is Q 600 coulomb. 600 coulomb by E 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. So this is equal to 3.75 into 10 to the 21. 10 to the 21 electrons. So this is the answer. Next problem. A charge plus Q moves in a circle of radius r with speed v. Find the frequency f with which a charge passes a point B so that average current is Qf and express it in terms of v and r. We draw a circle of radius r. The charge Q is moving with velocity v. This is the velocity v. So now we have to find the frequency. We know that frequency f is equal to reciprocal of time period. Velocity v equal to distance by time. Distance means the circumference. यार परिधि सर्कल रा परिधि s by t s होची 2 pi r by period ला t. So t equal to 2 pi r by v.
and frequency f, that is equal to 1 by t. So this is v by 2 pi r. So this is the frequency. Next, so that average current is qf. Current I, that is equal to q by t. Charge is q and here period is t. So this is equal to 1 by t is f. So qf. So this is the current. Or I equal to f is v by 2 pi r. So this is q v by 2 pi r. So this is the answer. Next problem. The current in the wire is given by I equal to 5 plus t square, where I is measured in ampere and time t in second. How many coulombs pass through a cross section of the wire in the time interval between t equal to 2 seconds and t equal to 4 seconds? Find the current. Solution. So we know that I equal to dq by dt, or dq equal to I dt, or then q equal to integral of I dt. Time is t1 to t2. So here t1 is 2 seconds and t2 is 4 seconds. I is given, that is 5 plus t square into dt. Now integrate. This is 2 to 4, 5 dt plus integral from 2 to 4 of t square dt. So this is equal to 5 into t, and lower limit is 2, upper limit is 4, plus this is t cube by 3 between limits 2 and 4. So this is 5 into 4 minus 2 plus 4 cube by 3 minus 2 cube by 3. So this is equal to 4 minus 2 is 2, 5 into 2, that is 10, plus this is 64 by 3 minus 8 by 3. So this is 10 plus 64 minus 8, that is 56. 56 by 3. So this is equal to 10 plus this is 18.6. That is equal to 38.6 coulomb. And to find current, I is equal to q by t, time interval. Here time interval is, we write, that is t2 minus t1. So this is 38.6 divided by 4 minus 2. 38.6 by 2. That is 19.3 ampere. Is the answer.